काजू बादाम घेऊन या अर्धा किलो. Hello? Hello? Yes, ma'am. Am I audible? Ma'am. Shall we start? Yes, ma'am. So, we are discussing the highest ideal of cure, and in that highest ideal of cure, we are discussing the third point, that is, that cure should be based on the certain principles that we are discussing. The first point is the restoration of the health, and second point is the cure should be mild, prompt, and permanent. Now we will discuss the third one, that is about the principles. So that principles that we are following to cure that patient should be fixed, that we have seen yesterday. The principles or the laws should be fixed. Second thing, we have seen that the cure should be from, what is the direction of cure? What should be the direction of cure? Internal to external. Interior to exterior. Yes, that is From from internal center to to, external. yes, center to circumference. Circumference. Yes. Hmm. So this is the third point. It should be based on the principle that we have discussed yesterday. The principle should be fixed as that of the gravitation. As the gravitational law is fixed, our principles should be fixed. It should not be a guesswork. It should not be a roundabout methods कि दो चार patient ठीक हो गए. That means this is the principle. This should not be like that. The manufacturer should be proper. Then this principle should not change again and again. These fixed principles are used to remove the disease for the restoration of the health, and hence the cure will be mild, prompt, and permanent. Then he has given the example of the cure, that is by the allopathic physician and by the homeopathic physician. So there is a difference between us and them. They said ki if the patient is having no eruptions or nothing is left behind on the surface, and patient is alive, that means the patient is cured. And but when he asked the same question to the homeopath, he said that ki first the sickness, it is from the inner side to the external part, and hence I am giving the medicine that will treat the internal economy first, and then the external will remove by its own. I am giving the less importance to the external parts of the body. He said that the cure should be from center to circumference. So this is the way by which he differentiate the cure of allopathic physician and the homeopathic physician. So the first, कितना टाइम लगाते हो तुम लोग एडमिट होने में? मुझे वही वही काम करना पड़ता है.
So what the homeopathic physician will say, he will say that the man will come first, his understanding will come first, and then the outermost orbit. That is, the will and understanding comes first. Then we have seen the law of cure. The cure should be from above downward. That is from the more important organ to less important organ. So from heart to hair, from heart to nail, not from nail to the heart. Then from the reverse order of their appearance. जो क्रिटिकल सिम्टम लास्ट में आया था वो पहले जाना चाहिए, और जो सिम्टम लास्ट में आया था सॉरी जो पहले आया था वो लास्ट जाना चाहिए. दैट इज आवर ऑर्डर ऑफ क्योर. Up to this, I think we have completed. Now from here we will start. It is thus he know that the patient did not merely get well in spite of treatment, but that he has cured by the action of the remedy. So the action of the remedy is again important here, because what is in our mind, the cure should be from center to circumference. And hence, whenever you are prescribed the medicine, it should be by the same way. It should act, it should or it should be given on the basis of the will and understanding. That is, from the center symptoms to the exterior part of the body. If a homeopathic physician goes to that also we have completed. If the medicine is in the reverse course, if the medicine is not able to cure the inner economy of the person, if it is not able to cure the internal symptoms of the patient, then this medicine is having the reverse course of action, and that medicine will never cure the patient promptly. And hence the order of cure of the medicine should be proper. One thing please remember, after the 5 minutes I will not admit to anybody. Continuously the participants are there and continuously I am admitting them. Now it is the 8 minutes. So remember, forever, after the 5 minutes I will not admit you. 5 minutes are sufficient for you. Every time I have to admit every candidate. Now I will not admit. Now it is an 8 minutes are get completed. I will not admit to anybody. I will give the 5 to 7 minutes to you only to get admit in the class. Every time I have to move there and admit. Why? I have given the schedule 1 hour before. So please adjust yourself according to that. Every time I have to move the cursor, admit all. From the next week, I will give you only the 5 minutes to admit. After the 5 minutes, I will not admit to anybody. Clear? Clear or not? Say yes or no fast. Don't waste the time. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Only 3 yes. And the 46 participants are here. Why not Yes, responding? ma'am. Yes, Why ma'am. all the participants are not responding? They are having the network problem. हा मग त्यामुळे सांगते काय So if the medicine is not following that course, that means it is having the reverse course of action, and that medicine will not cure the patient. That medicine is not able to cure the patient. But what will happen? That disease will converted into the chronic disease. जो acute disease था, because of the reverse order of the action, it is going from external to the from the circumference to the center. So that disease may converted into the chronic one. All the chronic diseases have first manifestation upon the surface, that is in the acute form. But when it is not treated properly, now it became a chronic one, and hence now it is from the innermost of the man. Now this vital organ is affected.
Now in proportion in which they thrown back upon the surface, it has to be seen that the patient is recovering. So these are the 2 points very much important. Yesterday also we have discussed it, ki when that disease is present on the surface, treat it there only. Otherwise what will happen, it will penetrate inside the body and it will convert into the chronic disease, and then we will say that कि बहुत ज़्यादा grievous disease patient को हुआ है and this affects the innermost of the man. लेकिन ठीक है, ये सब कुछ हो गया है, पैलिएशन, उसके बाद पेशेंट को सप्रेशन भी हो गया है. व्हेन द पेशेंट कम्स टू यू एज की chronic disease है, whenever you are treating the chronic disease, if you are treating the osteoarthritis, rheumatoid arthritis, or whatever may be the disease, while treating that, if the patient says ki my old symptoms are reappear again, I am on the 5 to 6 year back, I am having the warts on my hand, or I am having carbuncles on my body. So that is a good indication कि पहले जो उसको डिसीज था वो फिर से आ गया है. That means जो पहले पैलिएट हो गया था, उसके बाद जो सप्रेस हो गया था, now it come back again. यानी जो पूरा अंदर का जो इन्फेक्शन है, now it is coming back on the skin. या उसको सोरासिस था, एक्जिमा था, अस्थमा था, जो कुछ भी उसको पहले था डिसीज, while during your treatment of that chronic disease, if they comes back on the surface, it is a good indication. तो पहले का जो था, now I will not admit her, हाँ, शिवानी पन्ना से. So this is, it indicates that your medicine is correct one. आप जो मेडिसिन सिमिलर सिम्टम्स पे आपने जो मेडिसिन दी है ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्रॉनिक सिम्टम्स, दैट इज अ करेक्ट वन. वो मेडिसिन सेंटर पे एक्ट कर रही है एंड दैट्स व्हाई दैट मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग ऑन द सरफेस. So this indicates your way of the treatment is correct, your medicine is correct. Here it is a turmoil spoken of above follows the true homeopathic remedy, and the ignorant do not desire their outward symptom to be brought back even when it is known the only possible form of cure. So जो भी turmoil था, when it comes back on the surface, so this shows that now the cure is possible. To illustrate this, he has given the example कि the complaints of heart and the chest and the head must be in the recovery accompanied by the manifestation on the surface. So these are the 3 vital organs: heart and the chest, head, that is the brain. So all these are our vital organs. Whenever you are treating these vital organs, if the symptoms are appeared, outward symptoms are appear on the nail, on the skin, or on the hair, then this is the good example. Shivani Panna se admitted. Shivani Panna se is here. Yes, ma'am. From tomorrow, I will not Hello? admit anybody after 5 minutes. Yes, ma'am. Sorry, Now ma'am. it is 15 minutes are over. Akash Mane is also here. Yes, ma'am. From tomorrow, I will not admit you, huh? Okay, Only ma'am. 5 Sorry. minutes I am giving to admit to enter into the class. After that, I will not admit you. Now it's 15 minutes are completed. Yes, sorry, ma'am. So every time I have to admit, I have to move my cursor. That will not be allowed from the next week. I am giving 5 to 7 minutes, maximum 7 minutes. उसके बाद मैं आपको admit किसी को भी नहीं करूँगी, not आपको, किसी भी participant को मैं after the 7 minutes I will not allow to admit in the class. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So whenever you are treating the chronic disease, so treat from the center, and if the symptoms come back again on the skin, no worry for that, no issues for that. This shows that this is the point of recovery.
Hence, you will find that this part became a disease when the patient get well, the hair falls out or the eruption come back on the skin. ये बहुत सारे पेशेंट में हम लोग देखते हैं. आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिक डिजीज हेयर फॉल होता है, नेल्स का डिस्कलरेशन होता है, इरप्शन वापस आता है, बट उसके लिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है. द वाइटल फोर्स will overcome these small problems, and or we can also overcome by using the proper nutrition. this small problem के लिए मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, otherwise this will again transfer into the grievous disease. chronic disease, फिर से मैं बोल रही हूँ, whenever you are treating the chronic disease, if the old symptoms are reappear again, then this is a good indication. This shows that the medicine is correct, the way of treatment is correct, but that symptom should be older one, हाँ, not the new symptoms. उसके पेशेंट की हिस्ट्री में उसने बताना चाहिए कि मुझे ये पहले हुआ था. अगर ऐसा है, then only this is a correct indication. So whenever you are treating the joints, whenever you are treating the heart or the lung or the liver, then if the patient during that treatment, if the patient said that कि I am having a psoriasis जो मुझे पहले हुआ था, या मुझे हेयर फॉल पहले बहुत हुआ था, बार्नलेस था, now this is same thing is happening again. So this is, you have to be happy there कि आपकी मेडिसिन वहाँ पे करेक्ट है. You are following the law of the cure, that is from more important organ to less important organ, from center to periphery. So this is the way you can judge yourself, you can judge your medicine. It is impossible for a man to be entirely cured. It may be impossible for a state to pass off, but that is the direction of passing off, and there is no other course. So this is the way only that you can see ki, whether your medicine is correct or not. So this is only the way कि मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन तक आ रहा है क्या, रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस है क्या. बाय दिस वे ओनली you can judge. If the patient is incurable, there are the certain cases where the patient is incurable. Certain diseases रहते हैं because of the age factor or because of the condition of the patient, the seriousness of the disease, कि sometime we cannot cure that person. आर्टिफिशियल जो डिसीज होते हैं या जो डिसीजेस विच आर फॉर्म बाय यूजिंग द एलोपैथिक मेडिसिन, दे आर इम्पॉसिबल टू क्योर, दैट इज इनक्यूरेबल रहते हैं. इन दैट केस वी विल सी कि what we can do in the incurable cases in the philosophy only by the Kent. So in that incurable cases, you can palliate the case, not by using the violent medicine, but by using the mild medicine there, if the patient is incurable. But to judge that patient whether it is incurable or curable, we have to take the proper history. We have to wait before doing the palliation. So we can also do the palliation with our medicine by repeating doses, by giving the larger and the massive doses. So our medicines can be used for the palliation. एलोपैथी मेडिसिन ही यूज करनी है हमेशा पैलिएशन के लिए, ऐसा नहीं है. आवर मेडिसिन कैन आल्सो डू द पैलिएशन, बट वेयर ओनली इन द इनक्यूरेबल केसेस, कि जहाँ पे पेशेंट का एज ज़्यादा है या वहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत है या पेशेंट का और भी कुछ प्रॉब्लम है. सो इन दैट केस वी डिसाइड कि पेशेंट इज नाउ इन अ इनक्यूरेबल फेज, नाउ वी कैन डू द पैलिएशन. While the means by using the mild, वहाँ पे भी आपको violent medicine use नहीं करनी है. It should be a mild medicine. We should have the evolution of the disease, ये disease कैसे कैसे हुआ है, and then we can give the partial recovery to the patient. यानी patient को अगर pain है, bleeding है, so in that case you can stop that with the help of the mother tincture or with the help of the 50 millisiemens scale potency. So in this way जो ये incurable था, वहाँ पे भी हम we can use our mild medicine and we can give the partial recovery to the patient. To him, it is not appear mild, but the means that we use were mild. In acute diseases, we do not observe so much distress because in the acute, we will get the result very fast. But while we are treating the chronic diseases or which are deep seating, where the prescription of the massive doses is required in the incurable case, not in the curable cases, only in the incurable cases, कि जहाँ पे पेशेंट नहीं ठीक हो सकता है, in the chronic case we can use the mild medicine
for the palliation. The return of outward manifestation upon the extremities are noticed in such cases where it has been suppressed. So जो chronic, जो acute disease पहले suppress हो गया था, now it became a chronic one, and while you are treating some other disease, it will reappear again. And to illustrate this, he has given the one example कि doctor or a physician is treating the rheumatism of the hands and feet. Rheumatism यानी जहाँ पे पेन होता है, स्वेलिंग होती है, सो जॉइंट्स में जो पेन है दैट इज नोन एज रूमेटिज्म. द रिस्ट में, नी में, कौन से भी जॉइंट में इफ इट इज अ वेरी मच पेनफुल, स्वेलिंग है, जनरली दिस इज अपीयर आफ्टर द एज ऑफ 50 or 55, दैट इज नोन एज rheumatism. So here what the allopathic physician suggests, they will rub the ointment, they will rub the lotion that we have seen in the pharmacy, how to prepare it, and we have seen the uses of it also. So they will prescribe the lotion and ointment or the chloroform use करेंगे, या फिर they will ask the patient to use the hot fermentation or the cold fermentation. But because of what will happen कि the temporary relief will get to the patient. जब तक आप सेक रहे हो ठंडे पानी से, गर्म पानी से, या फिर लोशन या तेल लगा रहे हो, फॉर दैट टाइमिंग द पेशेंट विल गेट द रिलीफ, बट इट इज नॉट द क्योर. द क्योर शुड बी फ्रॉम जो भी उसका कॉज है वो निकलना चाहिए. अगर साइनोवियल फ्लूइड कम है तो उसको हमको फिर से सेल्स को एक्टिवेट करना है सो दैट दे विल फॉर्म अगेन. इफ इट इज अ इन्फ्लेमेशन वी हैव टू गिव द प्रॉपर मेडिसिन. इफ इट इज डीजनरेशन तो वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर्स. So in that case we can give the mild medicine so that the pain of that person will relieve. So if you are prescribing for the rheumatism, for the pain in the extremities, and during that if the patient said that ki I have returned my previous symptom, the patient will return and say, doctor, I have the same symptom that I had when I was treated by doctor so and so for rheumatism. So he will say that कि मैं रूमेटिज्म के लिए पहले एक फिजिशियन के पास गया था और मुझे ये पहले सिम्टम्स आ गए हैं. सो दैट इज अ गुड इंडिकेशन कि उसका पहला जो सप्रेशन था वो अभी निकल के आ रहा है. दिस कम्स आउट इन द प्रैक्टिस नियरली एवरी डे. इट रिक्वायर्स अ लिटिल एक्सप्लेनेशन टू द पेशेंट. If he is intelligent enough to understand it, he will wait for the remedy to act. अगर आपने रोमैटिज्म के लिए उसको कलकेरिया काप दिया है, सो बिकॉज ऑफ दैट कलकेरिया काप उसका जो ओल्ड सिम्टम था वो रीअपियर हो गया है. तो यहाँ पे केट ने क्या कहा है कि यू एक्सप्लेन द पेशेंट नाइसली. इफ इट इज इंटेलिजेंट इनफ ही विल अंडरस्टैंड. लेकिन कोई कोई पेशेंट जो है वो फिजिशियन को मारने आते हैं कि मुझे पहला सिम्टम कैसे आ गया. सो इन दैट केस यू हैव टू बी काम एंड क्वाइट एंड पेशेंसली वो पेशेंट को हैंडल करना है. क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि बिकॉज ड्यूरिंग द इंटर्नशिप आई वाज वर्किंग इन अ वन ट्रस्ट हॉस्पिटल and there the one homeopathic physician sitting on the 3 days in a week, and one patient came there. He is having the urticaria. सो बहुत पहले से उसको अर्टिकेरिया था लेकिन वो फिर सप्रेस हो गया अर्टिकेरिया. एंड देन he came to that trust hospital for the rheumatism. That is the same case. बहुत ज़्यादा एज नहीं थी वो पेशेंट की, 45-46 मिडल एज का वो पर्सन था. एंड ही इज अ ऑटो ड्राइवर. सो ऑटो ड्राइवर होने के कारण या फिर कोई भी वो व्हीकल चला लेता था. एंड ही इज हैविंग द नी पेन जॉइंट, स्वेलिंग आ जाती थी उस पर और बहुत दुखता भी था उसका. सो ही केम देयर फॉर द ट्रीटमेंट फॉर दैट नी जॉइंट. वाइल द ट्रीटमेंट पहले उन्होंने एक्यूट प्रूव्ड मेडिसिन्स दी, रेक्सट्रॉक्स दिया उसको, ब्रायोनिया दिया अकॉर्डिंग टू द मोडालिटी. एंड देन ही टुक द केस फ्रॉम दैट ऑटो ड्राइवर. जब उसकी केस ली थी तब उसने बताया था कि उसको पहले अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम था और उसका अर्टिकेरिया जो आता था दैट इज रेड पैचेस, देन इट कन्वर्ट्स इनटू द ग्रीन, ब्लॅक हो जाते थे. एंड ही टूक द आमसुलाचं पाणी आणि हे ते आवळ्याचं हे ते तो घेत होता. एंड देन ही टूक द एलोपैथिक मेडिसिन्स. 5 years बैक का उसकी वो हिस्ट्री थी. तो वो एलोपैथिक मेडिसिन, वो एंटी एलर्जी जो मेडिसिन रहती है वो सिट्रिजिन वगैरह, वो उससे उसका ठीक हो गया था. बट अब ये नया उसको कंप्लेंट शुरू हो गई थी, दैट इज रूमेटिज्म की. सो उसकी हिस्ट्री में था द हिस्ट्री ऑफ अर्टिकेरिया, उसका कलर भी था, ये सब हमने उसकी हिस्ट्री में लिख लिया था. वाइल
देन फिर उसको एक्यूट फ्लूइड मेडिसिन देने के बाद व्हेन वी हैव स्टार्टेड द क्रॉनिक मेडिसिन, उसकी मेडिसिन मुझे याद नहीं आ रही है, बट डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी हाइट भी अच्छी थी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छा था. So depending upon the repetization, we have given that physician and we all the interns had given him the one medicine according to the constitution. So that medicine एक ही डोज उसको दिया था और उसके साथ उसको कलक्रिया फॉस या कलक्रिया फ्लोर कुछ तो भी ऐसे दिया था, that is a biochemic medicine, so that वो थोड़ा सपोर्ट रहे. 6 में वगैरह कुछ तो भी ऐसे दिया था उसको. Then after the 15 days or 15 to 20 days, suddenly he came with all the relatives. तो उसके साथ 2-3 और रिलेटिव्स थे. वो पहले हट्टा कट्टा था और उसके साथ और 2-3 रिलेटिव्स आ गए थे. एंड ही सेड दैट कि आपने हमको फंसाया, मैं आया था टू क्योर माय नी जॉइंट एंड अर्टिकेरिया ये कैसे फिर से आ गया. एंड वो रेड था अर्टिकेरिया, कहीं पे वो ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो गया था उसका, जैसे उसने हिस्ट्री में बोला था. द सेम सिम्टम्स रीअपियर अगेन आफ्टर 15 to 20 days, और ज़्यादा भी हो गए होंगे. So he came with all his relatives, and in that situation it is very difficult to handle क्योंकि अपने पास बाकी भी पेशेंट बैठे रहते हैं. एंड ही केम विथ ऑल द थिंग्स, सो दैट सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. सो बहुत पेशेंसली वहाँ पे बाकी सब डॉक्टर्स ने और वो इंटर्न्स ने वो पूरा किस्सा हैंडल किया था. सो ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट इनफ, इसलिए डॉक्टर केंट ने यहाँ पे एक वर्ड डाला है, इंटेलिजेंट इनफ. अगर वो समझ सकता है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो ये इस तरह से अगर आता है, सो वी हैव टू हैंडल दैट पेशेंट प्रॉपरली. अब उसने ये कहा था कि नाउ ट्रीट माय अर्टिकेरिया हियर ओनली, गिव मी द समथिंग सो दैट अर्टिकेरिया विल, क्योंकि वो अर्टिकेरिया के बाद ना उसको बहुत रेस्टलेस हो गया था, वो उसको खुजली भी आ रही थी. एंड इट शोज कैसे तो भी हो रहा था वो कि पहले का कैसे अभी आ गया, मैंने तो आपने क्या किया, वो पहले का आ गया, क्या किया, ऐसे वो चिल्ला रहा था. सो दैट इज एक्चुअली द गुड इंडिकेशन कि उसका अर्टिकेरिया आ गया था वाइल ट्रीटिंग द नी जॉइंट. उसको फिर क्रीम दिया था एक लगाने के लिए, वो सेटल हो गया. उसके बाद उसको बोला था आइस लगाओ और मर्ड लगाओ, ऐसा कुछ तो भी उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम लोगों ने दे दिया था. बट दैट सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इफ ही इज कमिंग विद द रिलेटिव्स. लेकिन हम लोग अंदर से खुश भी हो रहे थे कि वे ऑफ ट्रीटमेंट इज गुड, द पोटेंसी इज गुड, the dose is good, so all the part of posology is very good. Old symptoms reappear हो गए हैं उसके, so that is a good indication. And after that वो उसका धीरे धीरे अर्टिकेरिया कम हो गया. बट वी यहाँ पे एक हमको क्वेश्चन लेना पड़ता है कि वी शुड नॉट प्रिस्क्राइब फॉर दैट अर्टिकेरिया और फॉर एनी ओल्ड सिम्टम्स. इट विल, वो ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन वो पेशेंट इतना पैनिक हो गया था एंड दैट्स व्हाई ही इज हैविंग द ईचिंग. जब आप मेंटल कंडीशन आपकी स्टेबल नहीं रहती है, सो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर फिजिकल लेवल. अगर वो इतना पैनिक नहीं होता तो वो अर्टिकेरिया निकल जाता अपने आप, वहाँ पे उसको ईचिंग नहीं होती, ना कुछ होता, कुछ भी नहीं होता उसको, बर्निंग भी नहीं होती. लेकिन वो उसके दिमाग में था कि आ गया है फिर से अर्टिकेरिया, अब ये कैसा दिखेगा, क्योंकि वो पूरे हाथ पे था, पैरों पे था, सो वो ठीक नहीं लग रहा था उसको. सो हिज विल एंड अंडरस्टैंडिंग, जो केंट ने पहले कहा है कि विल एंड अंडरस्टैंडिंग कम फर्स्ट एंड देन द आउटरमोस्ट थिंग. सो वो खुद को ही उसको अच्छा नहीं लग रहा था वो, इसलिए वो पैनिक होके इट कॉजेज द बर्निंग और इट कॉजेज द ईचिंग. नाउ बर्निंग एंड ईचिंग दे आर द सब्जेक्टिव सिम्टम्स, वी कैन नॉट फील इट, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. सो वो जो बोल रहा था उस पर हमको विश्वास करना जरूरी था, भले ही उसको वो हो रहा है नहीं हो रहा है, वो उसको ही पता था. सो जस्ट वी हैव गिवन हिम द कोल्ड एप्लीकेशन लगाओ या कोई भी एक ऑइंटमेंट दे दिया. बट आफ्टर दैट इस रूमेटिज्म का जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे उसका कम हो रहा था. और अर्टिकेरिया के लिए वी हैव नॉट प्रिस्क्राइब एनीथिंग, ऐसे ही उसके घरगुती इलाज सलाह दिलो होता करायला, एंड देन वो उसका पेन भी धीरे धीरे कम हो गया था. बट दैट सिचुएशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज कि ओल्ड सिम्टम्स रिया. हम तो अंदर से बहुत खुश होते हैं कि चलो आवर मेडिसिन इज परफेक्ट, but it is very difficult for the patient and very difficult to handle the relatives also. Okay. But the physician who thinks most of his pocketbook will say, I don't give him the liniment to put on the limb, he will go off and get another physician. लेकिन वहीं पे अगर एलोपैथिक फिजिशियन अगर होते हैं, अगर ओल्ड सिम्टम्स रिएक्ट अगर वो आता है,
सो दे विल गिव द ट्रीटमेंट फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि नहीं तो पेशेंट क्या होगा, दूसरी फिजिशियन के पास चला जाएगा. एंड दैट्स वाई एक बार पेशेंट आया तो उसको कैसे भी करके दे हैव टू ट्रीट. It may be the evil treatment, it may be the against the humanity, it may be the against the intelligence of the humanity, but they are giving the violent medicine so that एक बार पेशेंट अपने चेम्बर में आया है तो उसको ट्रीट ही करना है, बाय हुक और क्रुक उसके वो जो मैनिफेस्टेशंस है वो निकाल के ही फेंकने हैं बाय गिविंग द वायलेंट मेडिसिन. If you have learned to prescribe for the patient even though a sufferer, if you have learned that is the right to do, it is a violation of conscience. So I can say that आपको पेशेंट को ट्रीट करना है, माइल्ड मेडिसिन से ट्रीट करो. डोंट सफर द पेशेंट मच मोर, बिकॉज पहले से ही उसका वाइटल फोर्स डिरेंज है, पहले से ही पेशेंट बेचारा सफरर है. अननेसेसरीली आप उसको ट्रीट वायलेंट मेडिसिन से मत ट्रीट करो कि पेशेंट दूसरे फिजिशियन के पास चला जाएगा. दिस इज नॉट द वे. This is the violation of conscience. This is the violation of the humanity. So this paragraph यानी वो जो थर्ड पॉइंट जो है, ये पूरा पैराग्राफ हमको क्या इंडिकेट करता है? This indicates a man's integrity. That is the will and understanding. It should, while you are treating, it should be based on the fixed principles. It is our duty to maintain this integrity. We have to maintain this will and understanding. So what is our basic principles जो है, they should be fixed, and that basic principles, when it is conversant with the materia medica, then you can treat that patient very nicely. And if the physician is conversant with the fixed principle, with the materia medica, then he will be a preserver of the health, because he know the importance of the principles, he know the materia medica, and the cause of the disease after that will disappear very soon. The friendship of that the physician and the patient may be लाइफ लॉन्ग की हो जाती है, लेकिन उसके लिए द फिजिशियन शुड हैव द नॉलेज ऑफ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स एंड ही शुड बी वेल एक्वांटेड विद द मटेरिया मेडिका. He has more than that, he has a clear conscience all the belong. उसको वो conscience भी चाहिए कि पेशेंट आए हैं ये तो हमको इसको अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, ना कि ये दूसरे फिजिशियन के पास चला जाए इसलिए उसको कैसे भी करके ट्रीट करना है. The cure should be always center to periphery. When he lives a life, he does not allow himself to wink at the notion that carried out the families. उसने अपने ही जो एटिकेट्स है या जो प्रिंसिपल्स है उसको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. He should avoid all these things so that the patient will treat properly, so that he will be a preserver of the health. Unless the people lead orderly life, he will not cure of their chronic diseases. अगर physician के ही principles अगर fix नहीं है, so he will not be able to treat the chronic disease, and hence it is a duty of the physician to inculcate such principles which will help to preserve the health of the patient, which will be maintain the integrity inside the patient, that will help you to live the orderly life. The physician who does not know that order, he ought not be trusted. So those physicians who are using the violent medicine, those are not treating the patient with the fixed principles, with not the unprejudicedness, then they are not the trusted physician. And at the last he said that it is a duty of the physician then first to find out inside the man what is not in order, what is a disorder. So that means the health now is in a disorder. We have to restore that health. We have to return the health of that person, which is the perfect cure. That is our duty. And it should be accompanied with the mild, it should be accompanied with the gentle medicines, so that that life force will overcome the remaining symptoms, so that that internal man will be again in the order. But all these things should be based on the fixed principle. The fixed principle will guide, of course, by using the homeopathic medicine. So this is our duty, and if you are not doing all these things, then this will be a violation of the conscience. So this is about
the highest ideal of cure, how the cure should be. So the cure should not be only the removing the symptoms which are manifested externally, but it should be at the same time there should be a restoration of the health. The health should be returned back. Patient ने हमको कहना चाहिए कि yes, now I am comfortable. All the parameters should be within the range. The patient should not feel any discomfortness. That is, the person is who is unmuted. Please be on mute so that the health will be returned. But for that, we should not use the violent medicine. We should use the mild medicine so that the cure will be mild and the gentle and speedy recovery will be there. But all these things are only possible on the basis of the fixed principle. अगर आपके एटिकेट्स आपके प्रिंसिपल्स ही अगर ठीक नहीं है, सो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रीट दैट पेशेंट. यानी वो वैसा ही हो जाएगा, पेशेंट आया है, इससे हमको पैसे लेने हैं, कैसे भी करको इसकी कैसे भी करके इसको ट्रीट करो, अदरवाइज ही विल गो टू द अनदर फिजिशियन. सो ऐसा हमको एम नहीं रखना चाहिए. वी शुड ट्रीट द पेशेंट विथ अवर इंटेलिजेंस, विथ अवर फिक्स प्रिंसिपल्स, because these principles will only help to find out the medicine, to repertorize the medicine, and to give the cure to the patient from center to periphery, from more important organ to less important organ. And if the old symptoms are reappear, then we should be happy कि our posology is perfect. Now we are treating the patient in an orderly way. We are restoring the vital force properly. Now the internal man into its order. So for that, we should be conversant with the materia medica. So our principles plus materia medica will give the restoration of the health, and that cure will be the mild and it will be a permanent cure. So that is the highest ideal of cure given by Dr. Kent. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Any Yes, query, ma'am. any doubt in this? Anything you have not understood? No, Short ma'am. नहीं समझा है, No, ma'am. बहुत डिफिकल्ट है, सर के ऊपर से गया है, ऐसा No, कुछ ma'am. है इसमें? थर्ड पॉइंट समझा है आज का? फिक्स प्रिंसिपल्स एंड ऑल द एग्जांपल्स. Highest ideal of cure is clear? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So today I will give you the notes for the same, and in the second session again we will start our aphorisms. Okay, Okay. Yes, ma'am. but please take the screenshot for the whole chapter so that you will also add your points. मैंने पहले ही बोला था I am giving the notes, but कोई points मुझसे भी छूट जाता है, थोड़ा व्यू मेरा भी अलग रह सकता है आपसे. So you better you also prepare your notes and then join together. तो you can take the screenshot for the third point. पहले 2 पॉइंट का मैंने आपको टाइम दिया था स्क्रीनशॉट निकालने के लिए. इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द थर्ड पॉइंट आल्सो, so that you can also add your notes, your points. From here the third point started. If you want you can take the screenshot from your mobile or from your laptop. So don't depend on the notes from the lecture. You also prepare your notes. यानी आपके भी points जो है वो उसमें add हो जाएंगे. Your answer will be more comfortable to you. तो आपको वो लिखने में भी आसानी जाती है अगर आप आपकी खुद की नोट्स बना रहे हो. बट वाइल प्रिपेयरिंग योर नोट्स जो सेंटेंसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जैसे वो ब्लू से लिखे हुए हैं, दे शुड बी इन योर आंसर. Whenever I am teaching you the lesson, I am giving you okay this point is very important, it should be as it is in your answer. So वो तो point आने ही चाहिए, because while we are checking the philosophy, वो लाइन हम लोग देखते रहते कि बच्चों ने लिखे है कि नहीं लिखा है. So वो लाइन अगर दिखते हैं एग्जामिनर को तो he will give the proper marks to you. So try to
write down the language from the book. लेकिन वो language use करते करते it should have the proper meaning also. So in this way you prepare your own notes, add it into my notes, and in this way you will get a good answer.